दोस्तों डेट है आज की 4 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे आज की हमारी डेली आंसर राइटिंग। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑपरेशनलाइजिंग मास ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फॉर अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल इज़ नॉट एन ईजी फीट, कमेंट। तो बेसिक क्वेश्चन काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर में पूछा गया अगर आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ मास ट्रांजिशन करना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बस सिंपल सी बात है, ये पूछा गया क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में आप कुछ और चीज़ें भी ऐड करोगे थोड़ी थोड़ी, जैसे इसके अंदर में ऐड करोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिग्निफिकेंस ऐड करोगे, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये आपको मतलब छोटे छोटे करके ऐड करने हैं। उसके बाद में वे फॉरवर्ड, बट मेन जो आपका पार्ट है वो ये वाला पार्ट होना चाहिए। ठीक है, 4-5 पॉइंट जो लिखोगे आप, इसके मेन वाला ये पॉइंट होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। टारगेट की अगर बात करते हैं, इंडिया का टारगेट है 30% हमारे व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक होने चाहिए 2030 तक। रिसेंट के अंदर यूके के द्वारा डिसाइड किया गया कि कंप्लीट पेट्रोल और डीजल के व्हीकल उनको बैन कर दिया जाएगा 2030 तक। तो इंडिया ने भी पहले 2017 में टारगेट रखा था कि हमारे 100% व्हीकल जो होंगे वो हमारे इलेक्ट्रिक होंगे 2030 तक, लेकिन फिर वो टारगेट हमें काफ़ी अनरियलिस्टिक लगा, इसीलिए हमने उसको चेंज किया। अब 30% होंगे। नेसेसरी इंडिया के लिए क्यों है? नेसेसरी है, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। एयर पॉल्यूशन से लगभग अगर बात करते हैं, जो हमारे व्हीकल से निकलने वाला एयर पॉल्यूशन है, उससे 74,000 प्रीमेच्योर डेथ होती हैं करीब करीब 2015 के अंदर। तो अभी हमारे पास में ये वाला जो है ये 80-90,000 के करीब होगा कि इतनी हमारी प्रीमेच्योर डेथ हो रही हैं। और दिल्ली जैसी सिटीज़, इंडिया की काफ़ी सारी सिटीज़ जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर आती हैं वर्ल्ड के अंदर। और उसके अलावा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो कि एक जर्मन वॉच थिंक टैंक है, एनवायरनमेंट का थिंक टैंक है, उसके द्वारा जारी की जाती है। उनके द्वारा हमारी रैंकिंग को और ज़्यादा ख़राब कर दिया गया। मतलब पहले 14 पे थी, अब उसको 5 पे आया। रैंकिंग किस चीज़ के लिए दी जाती है कि कितने ज़्यादा वल्नरेबल हो आप, जो क्लाइमेट चेंज का रिस्क है उससे कितने ज़्यादा वल्नरेबल हो। तो इंडिया पहले 14वें नंबर पे वल्नरेबल था, 5वें पे आ गया। अगर पहले पे आता है मतलब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, तो इंडिया की रैंकिंग ख़राब हुई। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी हम इतनी सारी इंपोर्ट करते हैं, लगभग 5-6 लाख करोड़ रुपए की हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए ऊपर भी हमारा इंपोर्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ अगर उस चीज़ को रिमूव किया जाए तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और एक स्टेबिलिटी भी आएगी। बाहर से इंपोर्ट कितना करते रहेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है, जो कि मेन कंपोनेंट है इसका, इसको आप छोटा करके लिख सकते हो 2-2 3-3 लाइनों में, इतनी बड़ी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारी एसोसिएटेड चैलेंज क्या है। फर्स्ट चैलेंज आता है बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बैटरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके साथ में अगर आपने सोलर पैनल लगाने हैं उसके छत के ऊपर लगाने, तो वो भी आपके पास में होने चाहिए। अब ये वाले जो बैटरी सेल हैं इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते। इंडिया के अंदर में ना के बराबर काम है इनका। हमारा मोस्टली जो काम है, एक तो चाइना, ठीक है, जापान, चाइना, कोरिया, यूरोप, इनसे हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। सेकंड आया चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर। बैटरी तो आपने डाल दी, उसमें बैटरी के चार्जिंग के सेल डाल दिए, लिथियम आयन बैटरी डाली, अब उसको चार्ज भी करना है। आपके पास में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट डे में पेट्रोलियम का रिफ्यूलिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाता है 2-3-4-5 किलोमीटर की दायरे के अंदर में, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लगाना है पूरे इंडिया के अंदर में, वो भी एक चैलेंज है। फिर ग्रिड की कैपेसिटी जिसके अंदर में आप इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको आवश्यकता है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए तारें बिछा के उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी उतनी होनी भी चाहिए। जैसे इसमें बोला गया, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आते हो, ये मतलब छोटी सी मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल की कन्वर्ट करते हो, तो मिनिमम आपको 10 गीगावाट एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होगी, मतलब जो कि एक्स्ट्रा आएगी इनके कारण, और 2025 तक 50 गीगावाट हो जाएगी। मतलब आपको इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा ऐड करते रहना होगा। लेकिन इंडिया सिर्फ 20 गीगावाट एवरी ईयर ऐड कर रहा है, जो कि हमारे लिए इनफ नहीं है। और 20 गीगावाट तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ऐड नहीं कर रहे, हमारी अदर एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे अगर आप एक फ़ोन रखते थे अब 2 रख रहे हो, पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी अब वॉशिंग मशीन लेके आ रहे हो, तो उससे एनर्जी की डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे कोई भी इकॉनमी ऊपर ग्रो करती है वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड ग्रो करती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंडिया की डिमांड 2 टाइम 3 टाइम के करीब होने वाली है, तो इंडिया को वो भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा लोकल इश्यूज़ आ रहे हैं। लोकल इश्यूज़ के अंदर में हमारे आ रहे हैं, देखो पहले तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने पीछे देख लिया। उसके अलावा हमारी कंजेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा रोड कंजेस्टेड होते हैं। उस केस के अंदर में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, उसके बाद उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। सेकंड आता है अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आपकी परचेजिंग पावर इतनी कम है तो आप कैसे अफोर्ड करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास में, और वेरियस काइंड के ट्रांजिट के सिस्टम अवेलेबल होने चाहिए। जैसे हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर में, अगर मान लो दिल्ली के अंदर में पहले से इतने सारे व्हीकल्स हैं, तो गवर्नमेंट को उस समय लोकल तरीके से देखना चाहिए वहाँ पे ट्रांजिट की कौन सी फैसिलिटी अच्छे से उपलब्ध है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को मेट्रो की तरफ मूव करना चाहिए, या हमारी बसेस को इलेक्ट्रिक बनाना चाहिए, उसकी तरफ मूव करना चाहिए। तो वो हमें कुछ देखने पड़ेंगे, लोकल जो इश्यूज़ हैं पर्टिकुलर एरिया के, उनको हमें देखना पड़ेगा।
करंट पॉलिसी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फेम स्कीम, जिसका नाम है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, या आप इसी को बोला जा सकता है नेशनल ई मोबिलिटी मिशन। तो उसके अंदर में फेम स्कीम हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने बोला है 30% हमारे व्हीकल इलेक्ट्रिक होने चाहिए। और इसमें कैसे होने चाहिए, फास्टर अडॉप्शन होगी आपकी। फास्टर अडॉप्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सब्सिडी वगैरह दे देंगे, ठीक है। जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, एक पीएसयू है गवर्नमेंट के अंदर, वो खरीदता है इस टाइप के व्हीकल गवर्नमेंट के यूज़ के लिए। फिर हमने मैन्युफैक्चर करना है जल्दी से जल्दी व्हीकल को, ठीक है। तो ये इसके अंदर में बोला गया। अब वे आउट के अंदर में सेम चीज़ें जो पीछे लिखी हैं, आपको वैसे वे आउट सेपरेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो ये वाले पॉइंट होते हैं इन्हीं के साथ में अगर आप साथ में लिख दो तो काफ़ी अच्छा देखने को लगता है ये, ठीक है। अदरवाइज सेपरेट भी लिख सकते हो, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करो, बैटरीज़ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, कंपिटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, और सोलराइजेशन भी करो। इलेक्ट्रिसिटी मान लो अगर आप कोल से प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोल से प्रोड्यूस कर रहे हो या पेट्रोल से प्रोड्यूस कर रहे हो, ये दोनों सेम ही बात आ रही है। जैसे इन दोनों से मान लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो, और प्रेजेंट केस के अंदर में आप पेट्रोल से या डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो, तो दोनों केस के अंदर में हमारा कार्बन, एक्स्ट्रा कार्बन एमिट होगा एनवायरनमेंट के अंदर में, तो पॉल्यूशन तो हो ही रहा है। आप अगर पेट्रोल को कैंसिल भी करते हो तो भी आप कोल का यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर में ऐसा नहीं कोई ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमें सोलराइजेशन की तरफ इंक्रीज़ होना चाहिए, प्लस बूस्ट करना चाहिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लास्ट के अंदर आप लिख सकते हो कि ऑपरेशनलाइज अगर आपने करना है मास मोबिलिटी 1.3 बिलियन पीपल के लिए, वो हमारा इजी फीट नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना पड़ेगा वेरियस स्टेट की पॉलिसीज़, किस तरीके से हम प्राइवेट प्लेयर को साथ में जोड़ सकते हैं, कोलैबोरेशन के साथ में काम कर सकते हैं। या आप इसमें ऐसा बोल सकते हो कि आप एक सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, जिसको इन चीज़ों के प्रति अडॉप्ट करना है। So today's question is, operationalizing mass transition to electric mobility for a country of 1.3 billion people is not an easy feat. Comment. So UPSC has given you a statement, then they are asking you to comment on that. They can also write here explain, critically analyze, or analyze. These are also standard word of UPSC. But if you understand the question well, you can write anything. These word does not matter much in many cases. So operationalizing mass transition to electric mobility for a country of 1.3 billion is not an easy feat. If we say discuss, we will write the same thing here. If we say analyze, we will write the same thing here. So it does not make much difference in some question. In some question you have to see that whether they are asking about discussing or critically analyzing or examining particular thing. So in this case they have given you a statement, and now they are just simply asking you to comment. So the main theme of the question is that mass transition to electric vehicle is not an easy feat. So what are the problems in mass transition? That is the main point of crux of this topic, but you have to write some subsidiary topics also. So first introduction, what is the target of electric vehicle in India? Earlier in 2017, India set a target of 100% electric vehicle by 2030, but after protest from automobile sector, they said that there will be a huge job loss and we cannot shift that easily. So government decreased their target to 30% of electric vehicle by 2030, and recently UK said that we will completely ban petrol and diesel car by 2030. Then we have to give a little significance of electric vehicle, or what is the necessity of electric vehicle. So in that we can talk about pollution. Air pollution is one of the highest in India. Most of the cities which have population more than 1 crore in India are among the most polluted city on the planet. And if we talk about premature death due to air pollution, in 2015 it was 74,000. So right now it would be 80 to 90,000 premature death in India due to air pollution. Second, about climate change. We have to prevent climate change also. According to climate risk index, which is published by a German watch, which is published by an environment think tank named German Watch, India's rank has worsened from 14th spot to 5th spot in global vulnerability ladder. So what they are telling here, they are telling that if your rank is higher in this index, you are more vulnerable to climate risk. So India earlier rank was 14 and now it is 5. So if it is decreasing to 4, 3, it is a bad news for India. Okay, then we have to have a sustainable energy options. We are importing at least 5 to 6 lakh crore crude oil from Gulf countries and other countries. In that case, it also hurt our forex reserve,
it also hurt the energy stability that is required. If something happen in these countries, then it also impact us, and we have to take care extra cautious in our foreign policy also, because they criticize our Kashmir issue and other issues also. So if you want a sustainable energy option inside your country, plus you want your international relation and your foreign policy to be independent, then we have to shift toward electric vehicle. Then what are the associated challenges? This is the main theme of this question. Associated challenges are that lack of battery cell manufacturing. Battery cell, if you have to run an electric vehicle, you need to have battery. Okay, and battery contain battery cells, and generally we use lithium ion battery in these electric vehicle. But the manufacturing of these cell is not done in India. It is almost negligible in India, and we import these battery cell from Japan, China, Korea, Europe. So we have to become self independent in it, independent in it. Then we have building charging infrastructure. If you have to see our current status in petrol and diesel vehicle, we have refueling station every 5 to 10 kilometers. In this case also, we have to create such infrastructure for charging. Then limited grid capacity, you have to increase the amount of electricity that you have and the amount of electricity that your grid can carry. So according to Niti Aayog report, they said that we need at least 10 gigawatt of extra energy for 2020. Okay, if 2022, if we are to shift to electric vehicle, and by 2025 we need 50 gigawatt. But according to India's current energy need, means how much energy we are expending on every year basis, so we are expending 20 gigawatt per year, and that also include our household consumption and industrial consumption, and it also include our electric vehicle consumption. So means we are we are falling short in developing our electric grid capacity and increasing the amount of energy that we will spend on electric vehicle. Then we have some certain local issues, for example, congestion, affordability, infrastructure, and the transit system availability. We need to decrease the amount of vehicle that are running on the road, and we have to speed up the public vehicle, and in public vehicle also we have to boost it, toward electric vehicles. So these were some of the issues which are the main crux of this topic. Then what is the policy of government? The current policy of Indian government, the government has launched a scheme named FAME. It stands for Faster Adoption and Manufacturing Electric Vehicle. So what they are saying we have to adopt faster, we have to give incentive, fiscal incentive, subsidies, then we have to manufacture in India. Okay, so under this scheme we have a target of 30% electric vehicle by 2030. And then in way forward, you can write way forward with the issues also, but if you don't want to write there, you can write here that indigenous manufacturing of battery, research and development, competitive pricing of electricity, plus solarization is very much necessary, because in present context we are using petrol and diesel to run our vehicles. If we are shifting toward electricity, then obviously we will use coal. Coal, like petrol and diesel, is also a polluting fuel. So if we are shifting toward coal, it is not much impacting our air pollution status in our country. So what we have to do, we have to shift toward solar. So we are producing electricity through solar panel. Then we have to create charging infrastructure in our country also, and in the end, in the conclusion, you can say that operationalizing mass transition to electric mobility for a country of 1.3 billion people is not an easy feat. Thus a strong common vision and objective framework for comparing state policy and platform for public private collaboration is needed. So what does it mean? It means that yes, it is a difficult task, but by objective policy framework plus public private partnership we can achieve this. So this was the end of discussion. Meet you tomorrow. Thank you.